والغصن يرقص والغصن يرقص Hello and welcome to another episode of BHS Pulse, where every voice matters. I'm your host, Sanvi Cole, and I'm joined by Sanjeev Sheed, and today we are talking with some exceptional personalities whom we look up to every day. Our teachers from the higher secondary department, Akib sir, Pirzada Asif sir, Farooq sir, and Zuhaib sir. And what we are talking about, that is what matters. We're talking about a subject that has touched each and every one, not only on this podcast today, but each and every one's household, our teachers, our mentors, and our hearts. the The Indian great Indian education system. So, सबसे पहले, let's Sir, start light. Sir, Akib sir. क्या sir. चल रहा है सर? गर्मी चल रही है और क्या Heat wave is going on. That is a major challenge. हुसैन के सामने बैठे हैं वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस Hussain, my teachers said that heat wave is going on, but हमारे सारे teachers के दिमाग में syllabus completion का चल रहा है बस. We want to complete the syllabus this year. So, is it a challenge? Do you take it as a challenge? No, we have faced many challenges. We have seen so many catastrophes in the past. We can do everything. इंशाल्लाह So, while that is true, heat wave चल रही है, session छोटा है, summer vacation होनी है. In fact, heat wave के चलते 1 जुलाई से हमारी summer vacation है. Sir, might be, sir, 26 से हमारे high school के exams हैं, right? 26 से थे, but अभी पता नहीं हमें क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से हाँ So, for the best. स्टैंड है So- अभी स्टैंड है हाँ so आपको क्या लगता है परफेक्ट टाइम था समर वेकेशंस का या Yes, yes. कर इट्स सकते द थे? परफेक्ट टाइम इट्स द परफेक्ट टाइम So, तो लाइक एग्जाम पोस्टपोन Usually- करना वाज द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे. स्टूडेंट्स विल गेट सम टाइम फॉर प्रिपरेशंस आल्सो ड्यूरिंग दैट्स द वन But advantage of this. again that topic comes की syllabus completion. Sir, हो जाएगा. We think we 10 दिन से खास फर्क नहीं compromise पड़ेगा. with these summer vacations. That is also important. So, बारह we बच्चे- think बच्चे हैं. 10 days, Because we have to make 10 a days balance. won't have any major effect. हो जाएगा. Extend भी हो हो सकती है जाएगा. ना. See, this is Extend- the challenge. extend- है ना? Actually, in that 10 days, there are 3 holidays. So it's actually 7 working days. There are 2 gazetted holidays, 1 Sunday. It Let's hardly hope, matters. let's all hope and pray for the थोड़ा आपको भी extension, मेहनत inshallah. करनी है Extension Extension, right? And we have that key, that is assignment. Hussain, I'd like to one short point. Earlier, we used to have a concept. Presently, the students have become the spoon feeders. When we have the summer vacation, you get the time to study yourself. Unless and until you are not able to study yourself, you cannot do anything. That's my point of view. At least एक बच्चा इतना काबिल होना चाहिए तो थोड़ा सा उसको खुद भी पढ़ना आना चाहिए. मींस दे हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली हां They have to utilize it. Yes. प्रॉपर्ली एंड इफेक्टिव They have to do it. It is not something new that we are going to do it. दे हैव टू बैलेंस इट 1-2 दिन के लिए घूमने भी जाएं लेकिन 5-8 दिन घर पे से Absolutely true, sir. Summer break तो होनी ही चाहिए, sir. And sir, चाहिए, sir. इस गर्मी में आपका पढ़ाना और हमारा पढ़ना, सर, बहुत मुश्किल हो जाता है, sir. Sir, continuously classes देना, हमारी भी attend करना, sir, बहुत मुश्किल हो जाता है. And I think we all welcome the government's decision. Summer break होनी चाहिए. And alhamdulillah हो रही है. Hussain, this time we are sweating also. This time, Now we have to even there are multiple fans in the classroom. have to manage it now. Students should also manage, and we teachers also have to manage it. Compromise करना पड़ता है. Hussain, I'm saying that we are hardly 6-7 persons in this big room. There are 4 fans going on, but still we are sweating, and that's how it justifies that summer break is needed at this time. Enough warm up, I guess. Let's dive into our main discussion, Sanvi. सर अभी आप कर रहे हैं समर ब्रेक्स की बात, हमारी स्टूडेंट लाइफ की बात, हमारे सिलेबस की बात. अब आपकी बात करते हैं सर. जब आप एक स्टूडेंट थे, जब आप उसी क्लासरूम में थे बट नॉट एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, सर क्या चेंज था? Sir, आपके ओपिनियन से क्या डिफर करता है आज का स्टूडेंट? सर आपके हिसाब से उस टाइम में ऐसी क्या चीज थी जो आज के स्टूडेंट में आप मिस करते हैं सर? I think being as a student in my own time, I miss only one thing, that is search engine. You know what? That is Google. There is nothing else that I am different. I can differentiate my own school history and today's. No.
there was only one thing that right now we are able to Google, we are able to search the things. उस टाइम क्या होता था, एक बुक होती थी, उसमें से कोई टॉपिक सर्च करना पड़ता था. So right now we have that technology, we have that search engines. सर बट हाउ वुड यू समराइज सर, वो एक टॉपिक हो गया सर्च इंजन आज है, आज बहुत सारे फैसिलिटीज है हमारे पास, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, एंड सर रिसोर्सेज के साथ साथ बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी है. Distraction है, technology. See, we cannot neglect, we cannot ignore the technology. Absolutely, sir. Because technology is also important. Sir, वो But निज़ाम at है, the वो तो- same time, it can be like distraction. It can be distracted, sir. Sir, but- circling back to the main question, sir, how would you summarize आपका childhood, आपकी student life, sir? Sir, कैसी थी, sir? I think we used to be very much innocent. Right now, the students are not innocent. Whatever I came to know after completing my graduation, I am the graduate from NIT Srinagar. The students already know it at the 7th class. उनको वो 7th में पता है जो मुझे graduation के बाद पता चला. So that means वो एक difference मुझे लग रहा है that we used to be very much innocent. We used to be very submissive. That I can say. Hussain, I want to add one thing. हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा टेंशन दिमाग में नहीं रहता था जितना इस टाइम स्टूडेंट्स के दिमाग में है. सिलेबस कंप्लीट करना, ये करना, एंड वन मोर थिंग जो पेरेंट्स में है, सिक टाइप कंपटीशन. आपका मेरा भाई डॉक्टर बना, यू हैव टू बी डॉक्टर. दोज थिंग्स वर नॉट देयर हमारे टाइम पे. वी हैव एंजॉयड अ लॉट. आजकल के स्टूडेंट्स उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं अपने चाइल्डहुड को. कंपटीशन भी बढ़ चुका मैं है. अपनी बात कहूँगा, हम कहेंगे मैं चिल करके हमने पढ़ा है. मतलब मैं मैथमेटिक्स में बात करूँगा. अभी मैथमेटिक्स टीचर मुझे आज भी याद है, टिल 5th क्लास आई हैव नॉट सीन एनी टेक्स्ट बुक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गुड मैथमेटिक्स टीचर आल्सो. तो डिस्ट्रैक्शन इज द मेन डिफरेंस. हम बात कर रहे हैं कि हमारे ज़माने में और आज के ज़माने के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क था. एज ए सेड दैट डिस्ट्रैक्शन एंड वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रैक्शन इज़ द मोबाइल फ़ोन. आप आज के ज़माने में देखो, आज के ज़माने में 4-5 साल का बच्चा, इट इज़ हार्डली 4-5 years ऑफ एज, वो बेटर मोबाइल यूज़ कर रहा है एज कम्पेयर टू द 15, 16 एंड इवन 30-year-old मैन. दैट मीन्स वी आर एडिक्टेड टू सच थिंग्स. एक कमरे में एक फैमिली, वी हैव ए न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट दिस टाइम, ऑलमोस्ट हर फैमिली छोटी है. एक न्यूक्लियर फैमिली में 2 बच्चे, पेरेंट्स हैं और 4 के 4 बंदे मोबाइल में लगे. दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन. नाउ वी से दैट दिस मोबाइल फोन कैन बी यूज्ड फॉर द बेटर वेज, बट भाई आप एक टीन एज स्टूडेंट को आप एक मोबाइल थमा रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा वल्गैरिटी है. एंड वी हैव रील्स कंसेप्ट नाउ हाउ कैन ए चाइल्ड, आप एक फ़ोन उसके हाथ में थमा रहे हैं पढ़ने के लिए, और उसी फ़ोन के अंदर उसमें वो सारी चीज़, वो 1 घंटा पढ़े, वो सारी चीज़ वो अवेलेबल. बच्चा जो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट नहीं देख पा रहा है, उसमें भी 3 ही सेकंड देख रहा है. अटेंशन स्पैन बहुत अडिक्टिव है सर. तो You आप are एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो expecting that 4 घंटे बैठेगा मोबाइल पे, life- किसी का लेक्चर देखेगा. लाइफ इतनी तेज हो गई that we are not able to watch the 1-minute video. We like reels. Then why we like reels? Because जल्दी हो जाएगा. And how can a student जिसको 40 मिनट की क्लास में बैठना है और वो 1 घंटे की, 3 घंटे, 4 घंटे की वीडियो देखेगा? It's very clear from my side that mobile phone is a distraction. That is true, sir. Sir, while we talked about distraction and resources, let's now circle to a main subject. That's sir, आज की स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, उसकी उस पर कितनी एक्सपेक्टेशन से प्रेशर डाली जाती है सर. Mainly लेट मी कोट अ स्टोरी. एक मेरे बैचमेट के साथ ये हुआ है, एंड सर बिलीव मी मैंने से ये इट इज़ 100% ट्रू. क्लास 2nd में जो हम थे, यूनिट 2 था हमारा मैथ्स एग्जाम था अगले दिन. हिज मदर प्रिपेयर्ड हिम फॉर सिलेबस था उस टाइम. ही टोल्ड मी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन. 2nd क्लास में आपको सर कितना ही होगा सर. असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर रात को पढ़ के गया वो. सुबह he had an exam दिया अच्छे से. he goes to his mother शाम को with the question paper and दिखाते हैं कि मामा मैंने इसको ये लिखा and surprisingly उसने उल्टा बोल दिया गलती से.
असेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। सर जो उसका हशर हुआ है घर पे, सर यू वोंट बिलीव जो उसने मुझे बोला है सर, जो हशर हुआ है उसके साथ। सर हिज पेरेंट्स स्टॉप टॉकिंग टू फॉर 3 दिन के लिए डिडंट टॉक टू हिम। सर सेकंड क्लास के छोटे से बच्चे पे क्या बीती होगी Basically, सर, मतलब एंड सर प्लीज आप अपना बोले इसको। basically, first of all, before we counsel the students, we have to counsel the parents. पेरेंट्स Because I am being as a parent, I should counsel myself first. We all have that rat race. Rat race, you know, that unfair competition. कोई डॉक्टर बन रहा है, सबको ये बनना है। So that means अगर फोन आता है कभी, मैं एक कोट करूंगा एक मिसाल, हेलो क्या बने कईता मार्क छ 400 अच्छा यमिस कईता छ। So we are going with that rat race. Absolutely. We are only going with the marks. We become mark I'd like to sensitive, quote mark sense. एक रेफरेंस 3 That is इडियट्स the से issue. आपने So sir, let me finish. Sir, So please. we have to counsel the parents. They think that they are educated, but education is something different. To humanize the humanity, holistic development. That is the main purpose of the education. So वो चीज़ miss कर रहे हैं. I'm also the parent. I think I also miss that. घर में जब मैं देखता हूँ बाबा इतने मार्क्स आ गए, so students में भी वही माइंड सेटअप बना है that we have to come up with good marks. So first of all, the need of our is to counsel the parents. so like I'd like to wrap this up sir. I would like to wrap this up sir. आज we have like अभी तक concluded कि as compared to your generation, आपका childhood हमारे generation पे बहुत ज़्यादा pressure डाला Yes, जाता exactly, है, बहुत and that ज़्यादा is stress 100%. I बहुत think ज़्यादा we'll all stress will agree. सर आपके Because, टाइम पे इतना प्रेशर नहीं था। पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Blessing in disguise. Yes. Our parents, Yes, Allah, that's- mashallah, they were uneducated. illiterate. So they were not aware about uneducated. this thing. Now the time is that our parents are educated. very much But educated. still it is irony that they are not able to understand their words. Asif sir, I want. We cannot call everyone educated. We can say So they are qualified. So there's a difference between If- literate and if- educated. If they are really educated, then this story will not be there. And Hussain, majority of the cases, or not majority of the cases, all of the cases, we teach med and non-med students. And when we talk with the students, there are majority of the students who has been or who opt this subject by the parents. That means the subject is not chosen by the child; it is chosen by the parent. Why? चचेरे भाई ने मेडिकल लिया है, आपको लेना पड़ेगा। वो डॉक्टर बन गया, आपको भी बनना पड़ेगा। That is the So same we have to competition. opt the subject according to our capabilities, according to our abilities. That is true, sir. And it is That very matters. much unfortunate कि मुझे पैरेंट मिलने आ जाता है जब उसके बच्चे को मार्क्स कटेगा, अदरवाइज नेवर। अगर मैं उसके बच्चे को ऐसी 20 में से 20 दे दूं, कभी नहीं आएगा, इवन दो अगर उसके पेपर में उतना कुछ खास लिखा भी नहीं। तो वेरी मच मार्क सेंसिटिव, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली Our मेंटल हेल्थ पे society, our culture, मार्क्स के अलावा हमारे पास एजुकेशन भी Yes. नहीं है Yes, सर। exactly. जीपीए आनी चाहिए, सीजीपीए अच्छी होनी Yes, चाहिए, yes. 60 ये See, भी सर, लेकिन we- एजुकेशन I- नहीं है। I have been in NIT श्रीनगर, मेरे साथ ऐसे भी स्टूडेंट ये फ्रेंड्स थे, they were having the CGPA of 9.8. It means 98%. 90%. But it was just mugging. He just mugged it. But when he came into the industry, when he started his career, then he was nowhere. Because he was just going with what? Marks. So Not with classroom the real. toppers today might Yes. be at the back of every line tomorrow. So to sum it up, sir, I'd like to quote एक reference 3 Idiots है, I'm sure सबने देखी होगी। सर उसमें एक गाने में लाइन होती है, 95% में तो घड़ी वरना छड़ी। That is हमारी सोसाइटी आज, that is हमारा सिस्टम आज। एग्जैक्टली ये तो हम मानेंगे कि हमारे टाइम पे इस टाइप का प्रेशर नहीं था। कितने मार्क्स लाए, क्या लाए, मतलब हम नहीं कहेंगे बच्चों को पढ़ना नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कि अगर 10 में से 9.5 आए ना तो मुझसे बात नहीं करना। तो मतलब ये अप्रोच जो बच्चे के साथ है ना, ऑब्वियसली Sir, उसकी तो मेंटल हेल्थ खराब होगी। सर्कलिंग बैक टू जो मैंने आपको स्टोरी बोली थी अपने बैचमेट की, सर आईआईटी ये थी कि उसको एंड पे 100% था। एंड पे सर वो जो उसको इतना बोलने में mental हुआ था। pressure डाला, तो बोलने में गलत हो गया था। लेकिन इतना मेंटल प्रेशर, नेवरदलेस लेट अस से उसको अगर 90% ही आते फिर क्या, सेकंड क्लास के बच्चे से बात करना छोड़ो। I मैं- know it, मैं रिसेंट एक एग्जांपल Hardly कोट matters. करता हूँ। मेरी बेटी को क्लास टेस्ट में फर्स्ट क्लास में पढ़ती है 2.5 आया था आउट ऑफ 5।
और ऑनेस्टली मैं जब घर पहुंचा ना, मतलब मेरी मिसेज ने कहा देखो आज इसने क्या किया। मैंने कहा क्या किया है? इसको खाली 2.5 आया है। अल्लाह की कसम मैंने उसको लाया अपनी बेटी को, मैंने उसको माथे को चूमा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे आएंगे। That is the kind of parenting we need. That Yes. That is the kind of parenting we need, sir. Hats off. ये एग्जांपल सर, ये चाहिए आपको सर, ये एग्जांपल होनी चाहिए आपको। इवन मैं सबके लिए भी स्कूल एग्जांपल गया, मैंने कहा किस में आए? वो मागिंग मतलब ऐसी चीज़ थी, हम मागअप कर रहे, लाइक 5 का टेबल था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे खुद सीखेगी 5 का टेबल। इस बार नहीं आता, बोला बाबा मैंने याद नहीं किया था, मतलब मैंने मागअप नहीं किया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको 2.5 आए, आपको 2 1 2 2 2 4 5 तक आपको याद था, 10 तक बराबर याद नहीं था। तो मैम ने क्लास टेस्ट में लिखा। इवन मैं फिर उसकी जो मैथ्स टीचर थी उसको मैं मिलने गया, उसको मैंने बोला जब भी मेरे बच्चों को कुछ देना होगा ना, आप रिमार्क्स लिख सकते हो, प्लीज डोंट गिव मार्क्स, एस्पेशली इन दिस क्लास टेस्ट, डोंट गिव मार्क्स। सर सीम्स लाइक कि आप सभी मार्क्स वाले सिस्टम से बहुत डिसएग्री करते हैं आज में। ऑब्वियसली सर अगर आपको अभी लाइक पावर दे दी जाए कि एक ऐसी चीज जो आप इस एजुकेशन सिस्टम में या आप स्क्रैप करना चाहोगे या आप ऐड करना चाहोगे, सर वो क्या होगा? एक चीज स्टार्ट से आप। लाइक अगर आप कहते हैं ना कि ऐड की बात हम करेंगे, लाइक अगर हम देखेंगे ना आज के बच्चों में, लाइक जोहेब सर बोल रहे थे कि हम ज़्यादा मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि हम सारे यहाँ फिजिक्स टीचर है, बॉटनी टीचर, फिजिक्स टीचर, मैं मैथ्स टीचर हूँ। तो वो जो अक्सर हम स्टाफ रूम में भी वो बात करते हैं कि आज के बच्चों में वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं पाया जाता। तो जब वो कैसे पॉसिबल है? जब हम ये सिस्टम रखेंगे कि आपको 10 में से 10 लाने ही है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इवन मैं मैथमेटिक्स की बात करूँगा, अगर मैथमेटिक्स के किसी क्वेश्चन में मैंने 3 की जगह 4 लिखा होता है ना, बच्चा नहीं कर पाता है। तो अगर हम देखेंगे ना कि ये जो एजुकेशन मॉडल है ना, ये चेंज होना चाहिए। इवन अगर आप देखेंगे नैप में कुछ ऐसे नए पॉइंट्स आए हैं, लेकिन वो भी इंट्रोड्यूस नहीं हुए कि क्रिएटिव टाइप एजुकेशन होनी चाहिए। वो लाइक किसी चीज़ पे आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, हाँ, उस चीज़ पे आपको जज करेंगे, बिल्कुल इस मगिंग वाली चीज़ पे, लिखने वाली चीज़ पे आपको जज किया जाता है। मतलब ये भी एक पार्ट होना चाहिए, लेकिन 100% यही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। So, I will do one thing, that is, I will organize the program, weekly programs, and that program will be exclusively for the parents to counsel them. That is the need of our, what I think. As far as this thing is concerned, आपने कहा आप एजुकेशन सिस्टम में कौन सी चीज़ ऐड करना चाहते हो? मुझे लगता है कि वन थिंग आवर स्टूडेंट्स आर लैकिंग कि उनको खाली स्पून फीडिंग की आदत लग गई है। देयर शुड बी टीचिंग शुड बी इन सच अ वे दैट स्टूडेंट को भी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़े। मैंने हुसैन आपको बार बार क्लास में एक बात बोल देता हूँ, that this artificial intelligence is just to destroy the human intelligence. जब आप there is a theory of use and disuse, आप किसी चीज़ को काम कराना छोड़ोगे, ultimately it will become vestigial. So when I make my students as spoon feeders, उनको उस चीज़ की आदत लगाए, भाई हर कोई चीज़ टीचर को करना है, and sometimes कोई भी पॉइंट टीचर ने बता दिया वो लिखाना ज़रूरी, and what happened with that कि बच्चे खुद मेहनत करना छोड़ देते हैं, and they are not able to read the books. Book reading is important. It's not always that you use Google and Chat GPT. Student को भी तो कुछ आना चाहिए आगे when you are in the higher classes. Multiple times I told you that when you will be in the college, when you will be in the university, when you will be in the medical college, engineering college, you will not be able to understand anything there. क्योंकि आपको उस चीज़ की आदत लग गई है जो चीज़ जिस चीज़ ने आपको एक हैंडीकैप्ड बनाया। Unless and until you are not able to read the books, आपको खुद समझने की आदत है। So my way of teaching is that जब मैं पढ़ाऊँ बच्चे को भी थोड़ी सी मेहनत करनी। Actually, Hussain, you are asking such a question which is beyond our capacity. That you won't say you will be asked to change something. It is beyond the capacity of a teacher, but we can suggest. One important point is there which we can suggest related to our present education system where the change should be. I think ultimately we are coming again to the point we should change that examination system. That only writing basis by we cannot judge the students. It should be an open book system. The students should be given a chance to understand, to learn. Once he will be able to understand, he can reproduce the things. It is not necessarily that
what I have taught in the class, those particular lines should be there. No. We have become very much particular about that. That's- टीचर ने जो लिखा है, लाइक जो नोट में मैं वही लिखूंगा, तो कैसे, मतलब एक क्रिएटिव बंदा कैसे पैदा होगा? आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि एक बंदा पैदा होगा आगे जो रिसर्च में जाएगा, जो साइंटिस्ट बन सकता है? इवन कल की एक एग्जांपल है, एक पेरेंट मुझे फोन कर रहा था, फ्रेंड है मेरा, उसका बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको एग्जाम में आया था, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 32। ये तो क्रिएटिविटी है, उसने सीधे किया था 32 into 32 आंसर निकाला था, और उसकी टीचर ने उसको इतना हम पर्टिकुलर बने, इवन टीचर्स भी इतना पर्टिकुलर बने, टीचर ने क्रॉस किया था, टीचर ने ये बोला था कि आपने 30+2 होल स्क्वायर करके क्यों नहीं किया जैसे मैंने दिखाया था। इवन तो लगता है कि बच्चा क्रिएटिव है, उसको ये क्वेश्चन समझ आया कि मुझे 32 का स्क्वायर निकालना है, तो उसने अपने हिसाब से किया। इवन कि उसको अप्रिशिएट करना था, तो उसको ये बोला गया जैसे हमने किया था बिल्कुल ऐसे करना था। हम तो एक particular direction system, कन्वेंशनल examination मेथड्स पे system, रहते हैं। Examination conventional. system, if you'll be asked to, if you will ask us to give suggestions, what should be changed? I think it is the examination system, Examination system. which we should change. So change is a phenomena of life. Yes. Everywhere we say change है कुछ ना कुछ. So industry में. So let's take an example of a car. 100-150 साल पहले we used to have horse carriages. अब आज सुपर मोटर कार्स है, सुपर कार्स है हमारे पास. completely बहुत सर बट हमारा एजुकेशन सिस्टम के जो बेसिक रूट्स है वो आज भी वही है जो हाँ। 150-200 साल पहले थे. अगर एवोल्यूशन हर चीज में आ रहा है, Centuries, what was there, same is at present. they're still following the traditional way of teaching. Yes. There are developments in science. So we have But tools. regarding syllabus, our syllabus is same. हमारा Our syllabus कोर्स is हमारा not स्टडी changed. मटेरियल हाँ, दैट that is इज same. बाबा आदम के Curriculum जमाने is का. same. Curriculum is same. So I personally think जो अभी का एजुकेशन सिस्टम है वो बस एक स्टूडेंट के अंदर नॉलेज फिट कर रहा है. Yes. वो उसके Memorize. अंदर से कुछ क्रिएटिव चीज बाहर नहीं ला रहा है. Exactly. वो बस ओवर एंड ओवर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है नॉलेज वो बस उसके अंदर So वो the issue एग्जाम is में with बस वो our प्रेजेंट करनी है curriculum. पेपर पे. The issue is with our curriculum. You know what is the reason for that? Why we are not able to do it? That, as already Akib sir was telling about that, actually we are not trying to find out where our student is interested. When we are starting to select our stream, whether it has to go for art stream, this commerce stream, yeah, science, where it is med or non-med, at after 10th, that is maximum times by the parents. Yes, sir. Maximum times. I can say 90%. 90% is by parents. Actually, up to 10th, it should be the collective. It is the collective duty of the teachers as well as the parents. Teachers are observing a student right from, suppose a teacher is teaching a student from 5th to 10th, 6th to 10th. During these 4 or 5 years, I think it is the duty of a teacher Yes. to judge where he is more interested. What should be the line What are the suitable for inclinations? this? What are the inclinations? Accordingly, what you are talking about the creativity. When I am not interested in science stream, how I can be a creative person over there? Well, You has are to be expecting something different. We have to It is look at against individual nature. It's capacity. against nature. Simply, I'm not fit for I science. myself am my a parents mathematical are. student. My What is parents the are- problem if my daughter will opt history? But no, I'm a mathematics knowing person. My daughter should also No, go in mathematics. this I'm a mathematics. medical विरासत student चल and रही I है want इधर. my daughter to be medical Yes. student. I'm an That's engineering sick student. I want competition. my. That's actually sick competition. So I We think have to give- that particular concept is changing with the time. For example, I come from a family of commerce students, but I myself am a med student. Not because anyone forced me. He, for example, will choose non-med, but you're from a family of med students. So this particular concept is changing. So start हो रहा है अब change होना. Like parents now are starting to listen to to their children कि उनको क्या That is बनना है अब. important. That is important. ये एक नई चीज आई है हमारे Even my, माशरे में. As per my analysis is concerned, मैंने देखा है 90% of parents who are very much has also said very much qualified, very much qualified even on higher posts, but still they are just उसने क्या खास है कि आप नहीं कर पाओगे, उसने क्या खास था कि उसने किया, आप क्यों नहीं कर पाओगे? So I quote the words of Farooq Sari. There's a difference between education, between teaching and tutoring. Teaching and tutoring are separate. So coming to that, Sanvi. सर अब हमारे आगे अपने टॉपिक पे जो कि कोचिंग सेंटर्स वाला टॉपिक है सर कि आजकल स्टूडेंट्स
डमी स्कूल्स में एडमिशन करते हैं, डमी रखते हैं एंड कोचिंग जाते हैं, वहाँ से पढ़ते हैं, बस उनके लिए दैट इज everything. हमारा जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल स्कूल कल्चर है वो खत्म हो रहा है सर. आई थिंक आवर कलेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इस पे कि कोचिंग यूज्ड टू बी आज से 5-6 साल 10 साल पहले यूज्ड टू बी एक सोर्स ऑफ एजुकेशन, बट आज इट इज अ मिलियन डॉलर इंडस्ट्री, राइट? पता नहीं कितने करोड़ की इंडस्ट्री है एंड उनका मेन मोटिव अब यही होता है कि ये स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ेगा, टॉप करेगा, एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी एंड द स्टूडेंट्स आएंगे. दैट इज नॉट अ उतना एजुकेशन पे फोकस नहीं है, नो डाउट है, बट उतना नहीं. अब ज़्यादा बिजनेस के ये चला गया, बिजनेस के रास्ते पे. वी आर नॉट अगेंस्ट द कोचिंग सेंटर्स, बट हमने भी कोचिंग की है. नाउ एज यू सेड दैट इट हैज बिकम पता नहीं कितने करोड़ की बिजनेस इंडस्ट्री है. हमने भी कोचिंग की है, ऐसा नहीं है हमने कोचिंग नहीं की है, बट द सेंस इज क्रिएटेड इन द स्टूडेंट्स दैट भाई स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, स्कूल में नहीं पढ़ाते, आप कोचिंग आ जाओ, कोचिंग आ जाओ. स्कूल में टीचर्स क्या कर रहे हैं? इफ यू आर इन द स्कूल, वी आर वर्किंग इन द स्कूल, व्हाट वी आर डूइंग? आकिब सर इज टीचिंग इन द क्लास. क्या ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते? फारूक सर क्लास में है तो फारूक सर नहीं पढ़ाता. मुझे मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लग रहा है ये बात गलत है. जो एक सेंस एक क्रिएट किया जा रहा है अमंग द स्टूडेंट्स दैट आप स्कूल नहीं जाना है, स्कूल में नहीं पढ़ाते, कल इधर पढ़ाते हैं. Poison for a student of 9, 10, 11. It's like a poison. Propaganda और false advertisement इसी इंडस्ट्री से हुआ है कि स्कूल्स में नहीं पढ़ाते, अटेंडेंस होती है, वो होता है. Earlier it used to be from the 11th class. Now it used to be from class 8. Now it has मैंने been ऐसी shifted. हाँ मैंने ऐसी जगह नीचे आ रहा है. Now it Yes. has been shifted up to the 8th Yes, class. 8th class. 8th class का सर बच्चा. किसी ब्रांच में 6th क्लास से यूपीएससी कराते हैं. नीट की तैयारी के लिए कोर्सेज होते हैं. No, basically, I want to tell you that first of all, what is the purpose of schooling? That we actually lack. हमारे दिमाग में ये है कि स्कूल इसलिए जाना है दैट वी हैव टू इम्प्रूव आवर एकेडमिक्स ओनली. ये भी नहीं है कि स्कूल में एकेडमिक्स इम्प्रूव ना हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, Part and parcel. that is not the only part. School is meant for overall development. School is meant for holistic development. If you go through the coaching focus only on one part. Like, I want to crack NEET. Coaching will focus only on my NEET. Objectives. Let me स्पीड कैसे बढ़ा, न्यूमेरिकल कैसे कर रहे let me हैं सर? finish. आज यू से सर डिटेल में नहीं पढ़ाते उधर. डेरिवेशन फॉर एग्जांपल फिजिक्स में सर कितनी होती है? No, वहाँ कराते let सर? me नहीं. complete it. They will only focus on that portion. But you know, our school witness not only doctors, not only engineers. Our school witness chefs. Our school witness linguistics. Our school witness all the varieties. Our students are adjusted all over the globe. That is possible when they were having the proper schooling. You know, and one more thing. Suppose we have a student in Burnhall School, and for example, he is failing in NEET. Now, for us as Burnhallian or as a teacher of Burnhall School, he is not a failure. But for coaching center, He's a failure. Yes. for me, he is not a failure. बंदा आ जाता है कहीं से, बेटा आप क्या कर रहे हो? सर मैं आज शेफ हूँ. आई बिकम हैप्पी बिकॉज स्कूल में खाली वी आर नॉट ओनली क्रिएटिंग डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. सो कोचिंग में अगर पहले साल आपका नीट नहीं हुआ, देन वो आपको बोलते हैं इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. Yes. चलो अब आप ड्रॉप बैच ले लो. आप Yes, प्रॉपर drop. बैच ले लो. आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे. So Doubt they class make नहीं. that mentality that this is the only purpose of life. This is the only purpose. NEET is the purpose of life. Cracking JEE is the purpose of life. But I will add one in more thing. School, cracking NEET is not only the purpose of आसिफ life. सर, आई विल ऐड वन मोर थिंग. आप ही के हिसाब से बच्चा 6th क्लास में डमी स्कूलिंग करता है. 6th क्लास का स्टूडेंट डमी स्कूलिंग करता है. 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th वो बिल्कुल नीट की कोचिंग पे फोकस किया हुआ है. लेट अस सपोज दैट इस बड़े कंपटीशन में, इतने कंपटीशन में उसकी कल को सिलेक्शन नहीं हो जाती है, अगले साल वो ड्रॉप लेता है, अगले साल भी उसकी सिलेक्शन नहीं हो जाती है. व्हाट विल बी हिज फ्यूचर? क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ क्या तबाह हो होगा जाएगी. उसका, उसके फ्यूचर का क्या होगा? One उसके लिए option तो for that पूरा अपने लिए particular failure बन student will जाएगा. be a suicide. सर दैट इज वेरी persistent in our society. सर नहीं that is निकलता है, happening. पढ़ नहीं पाते सर. आप Sam, सीन कितने केसेस हैं हमारे. I want to say one thing related to this demi schools and the schooling. There is a big difference because we have to understand first what's the aim of the education.
The aim of education is not to teach physics only. As I am repeating my Teaching words. physics is not Teaching education. physics is not only education. Education is something different. Suppose, देखो, what we are doing in our tuition centers, I hope the people not take it otherwise. What we are doing in our coaching centers, our main aim is to prepare doctors and engineers. If we will have only these two options, it is against the nature. It is against the nature. Is it possible that every person in our society will be a doctor and an engineer? So, while those are noble pursuits necessary to sustain life, we have commerce, we have business, we have the There culinary are business. so many. Sir, खाली ये दो चीजें इंडिया में like our system is centered around medical, non-medical, science branch. या डॉक्टर बनना है या Sir, there's something called home science. Okay, let us वो आज We हमारे can't लिए say क्या है? medical, non-medical. We can say this medicine and engineering. Yes, sir. These two fields. But we cannot have only doctors. We are in demand of the good doctors. A doctor and a good doctor. What do we mean by a good doctor? There's That- a huge difference. He should know. He should not be a businessman. He should have that type of man. He should be educated to that extent that before writing a medicine to a particular patient, he should think, ये कौन सा मैं क्या लिख रहा हूँ? Is it like that? I'm sorry to say that there may be some doctors who are writing without checking that what is it actually beneficial for the patients or not. What is that which will trigger his that mentality? It is the education. Circling back up, sir, we mentioned NEET, we mentioned JEE. Sir, let's talk about a student in India. Sir, I'm presently in 11th, med student. Next year I have 12th. What about after my 12th board exams? What options do I have as a med student, sir? I have to crack NEET, NEET UG. That needs preparation. What else? What else is my option? या तो मुझे सर 1.5, 2, 3, 2.5 करोड़ की डोनेशन निकालनी है या फिर नीट क्रैक करना है. Talking about the non-med students, sir. उनके JEE JEE है. Talking about arts, UPSC, कॉमर्स में CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल, सर पता नहीं कितनी लेवल्स, अल्लाह आलम. सर लेकिन इन 4-5 कंपेरेटिव्स के अलावा व्हाट इज एक इंडियन स्टूडेंट का ऑप्शन आफ्टर 12th? या तो पैसे निकालो या तो ये. सो व्हाई कांट वी हैव अ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक ऑप्शन जैसे पहले हुआ करते थे, सर? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहले यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एडमिशंस हुआ करते थे सर, एंड बहुत जगहों पे आज है. सर्कलिंग बैक, सर, in India, our system only promotes comparative exams. No doubt centralization है ये, sir, लेकिन at what cost? और प्रमोट करने चाहिए pathways to Sir, a student. they shouldn't be only comparators. दो निकले तो निकले, नहीं निकले तो डोनेशन दो. ये हमारा फ्यूचर है. Is this what? One of the main reason for that is presently we the teachers, we are not teaching these subjects, physics, chemistry, bio, maths. We are not teaching as subjects. As a teacher, I should teach physics as a subject, not as a tool. We are teaching it as a tool Crack for this a particular examination. competitive exam. That is what Akif sir or Asif sir was talking about. That these days we are missing that type of scientific temper. जो पहले हुआ करता था. What was the purpose of going in science stream? That was not only to become a doctor or an engineer. That was that I have to go for the higher education, for the research purpose. What is in research? A person is giving something new to the world. So we should balance it. We should not teach physics only as a tool. We should teach as a subject. There is a famous quote who says, "Scope does not lies in the subject; it lies in the person." Yes. It's a very famous quote, and I totally agree with it. Scope एक सब्जेक्ट में नहीं होता है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं. इट लाइज इन द पर्सन. आप उस सब्जेक्ट को कैसे ले रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ रहे हैं. दैट इज इम्पोर्टेंट. Absolutely, sir. Sir, we have talked about आपकी generation की school life as compared to हमारी. We have concluded that, sir, हमारी generation has experienced a lot more pressure, a lot more expectation from us. yes. After that, sir, we talked about dummy school culture that has totally poisoned and destroyed हमारा Indian Yes. education system. Obviously. So, I'd like to add one more thing in that.
it's actually commendable that the CBSE, Central Board of School Education, NCRT, and along with the Education Ministry of the Union Government, the dummy school culture is being reduced to some extent, sir. These coaching I read some article a few months back that coaching centers will not be allowed to have their sessions during school hours. It's all on the paper. No, actually, I It's was not going on to the say, and one more thing, in W schools, you don't have practicals. So, what about the practicals? When you don't even know about the swinging of the pendulum, when you don't even know about the kinetic energy, potential energy, how they change, when you are not able to find out the internal resistances, when you don't have the practical knowledge, what is the fun? And that is the problem which a student faces in future. वो इंजीनियरिंग में जाता है उसको बहुत सारी बातें हैं सर जो ज़हब सर इंजीनियरिंग में बंदा जाता है he is not able to connect the two wires in series, he is not able to connect the two wires in parallel. Why? Because he has On paper बना के दिखा देगा. practicals We are don't have important. practical experience in the dummy school culture, so I think it is actually commendable that our government is trying to reduce the dummy school culture. I think they should do That it is an more like appreciable- practically than on It is paper, an as you appreciable said. move. So I want to conclude with this, that the teachers teaching in the coaching centers are tutors, Yes. but we the teachers teaching in the school are trying our best to become teachers. So, It's a the big school difference. focuses on all-round Obviously, holistic development. it's For their coaching centers, difference. students are their customers. Between tutor and a teacher, That's true, sir. what I can say, the responsibility of Farooq sir is not only to teach physics. It is to teach My discipline. responsibility is to guide my students. Yes, sir. My responsibility is to help them to differentiate between good and bad. Yes, sir. If you are not able to differentiate between good and bad, that means you are not educated. You may be qualified, but if you want to be an educated, that you should be able to difference between good and bad. That is the reason we don't need only the intelligent minds. Moral education. Moral education. We don't need only intelligent Moral minds, because sometimes the intelligent minds alone can lead us to the destruction. Yes. That is the Sir. present. What we are worried about the nuclear war. Sir, we talked about, after that we talked about the coachings, we talked about the dummy school culture, and finally we talked about what options a student has in India after his 12th boards. So I think this code which I'm about to say is enough to sum it everything up. The great Indian education system lacks nothing but education and a system. Educational system. Our system has everything, but we don't have education And we don't have the systems. So tutoring is not education. Tutoring is not education. making So the as you- student as you prepare always for say- exams. What a teacher does prepare a student for his life. For his life. So today we have discussed, I think, the majority part of the Indian education system. Although we can't, like in 40-50 minutes, we can't conclude the entirety of it. So I think we missed one point. That is, कि a student has two options: NEET, comparatives, or he has to pay. He has to pay a hefty amount. Rich So a families person has can to be do either filthy rich to become something, to achieve something in India, or comparatives. We already discussed the comparative part. Now, would you like to add something? There's a quote कि what if the cure for cancer is in a child's mind that cannot afford education? तो ये लागू करता है इस पे कि rich families जो है वो एग्जाम ना क्वालिफाई करके भी अपने चिल्ड्रन को आगे भेज देती है लेकिन वो स्टूडेंट जो कि अपना एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, क्लियर नहीं कर पाया, जो अपने आप को फेलियर समझता है, जो ये समझता है कि एग्ज़ाम्स के लिए बना ही नहीं है, वो तो अब टूट गया. उसके लिए उसका जो एकेडमिक का अपनी जर्नी थी वो ऑलमोस्ट 50% उसके लिए तो ख़त्म हो गया. सो यही पॉइंट लास्ट हमारा डिस्कशन का था. अब हम अगले फेज पे चलते हैं कंक्लूजन के लिए. दैट इज द रैपिड फायर राउंड. Sir, starting with the rapid fire round. Akif sir, noon chai or Lipton chai? Noon chai. Asif sir, noon chai or Lipton chai? Both. Farooq sir. Noon chai in morning and Lipton chai in evening. James sir. Noon chai. Goes to Akif sir. Which subject did you hate in school? I'm guessing biology. Which subject? Did you hate in school? Let's talk about higher secondary. Which subject did you hate in higher secondary? Biology. At his own time. You want Non-functional organism. Asif sir.
I think you are a med plus non-med student, right? I was PCMB. having both medical and So why didn't you pursue biology? Sir, क्या गलत है हम med students में? Actually, I was having issue. I was not able to memorize these bones, this and that. So I was Kingdom, very- Kingdom Monera, Kingdom Animalia. Kingdom Animalia. It's very difficult to memorize those We five. are able to remember everything. अल्लाह ने दिया होता है किसी को. Yes, yes, yes. Biology के लिए memorizing power अच्छा होना Farooq sir, चाहिए. I think you were a non-med student. I was non-med student those days. The So we are getting subject I should marginalized. not say the subject I hate. I should not use the word hate. Hate is a But I strong can word. say that Least like. where I was not interested, that was history part. I remember those dates, these, That those is really things. difficult. And after that, why I didn't opt for medical because of the complicated diagrams of the bio. Because my drawing is not that too much strong. Now I'm not Same, strong sir. in drawing वगैरह. That's the reason I opted for my maths. Liv Sir, sir, I think everyone is against biology here, sir. sir, हम लोग discriminate. Sir, हम marginalize हो रहे हैं, sir. No problem. It hardly Let matters. everybody hate it. It hardly matters. Sir, the more your haters are, the stronger we get. stronger we Yeah, the get. stronger we get. And as far as subject, I think SST. For me, SST was SST. History. We have two difficult. SST haters, two bio haters. Sir, So it is next question is coaching compulsory for the preparations of NEET or JW? Is coaching compulsory? would you recommend it? Is coaching compulsory, but the kind of competition presently is there. Coaching is compulsory For NEET and JEE, yes. for NEET and JEE. For NEET and JEE. So, would you recommend that a student attend school as well as coaching Yes, simultaneously? yes, yes. Schooling is also important. He has to make a balance. That is. Matlab, if he is to qualify NEET and JEE, he has to sacrifice He those has- 2 years of his Sir, life we and have like history. We used to have those students who were having 90% attendance, and they cracked the NEET. Even not cracked, they So were I think- toppers of the state. They topped. Hussain, it depends upon the capability and Capability capacity of the of the student. student. Whether it is necessary or not, we cannot say categorically. It is not necessary, or we cannot say it is necessary. It depends upon the capability and capacity of the student. so I have seen one exception in our school. In that way, that last year's batch, right? No, that was this Sheikh Gibran. Sheikh Gibran. He qualified both JEE Mains and this that there was JKC. JKCT at that time in 2014-15. Presently, he's pursuing his MD from US. So I'd like to quote Mueed Nisar from last year. Muhyiddin sir, but he was also doing coaching. great But He was doing coaching But- and school. Ah, yes. If I remember Was a correctly, he regular has the maximum student. attendance in He was Burma. able to Yes. balance the Very regular. And he Yes, has qualified regular. NEET, straight rank in NEET. He's currently Yeah, in well- GMC Srinagar. We had Raid, we had Ribal, they were Ribal. also regular Sir, it students of depends on the student's capability. capability मैं and आपको वही willpower. कहा, स्पून फीडर बच्चा नहीं होना चाहिए. Graph अगर बच्चा खुद उस बच्चे को थोड़ी सी अगर आप मेहनत heavy कर schooling सकता भी है, करवाएंगे ना- उसको स्कूलिंग की जरूरत एक ट्यूशन की जरूरत नहीं. अगर बच्चा थोड़ा सा खुद कर सकता है, हाँ. इट्स नॉट अबाउट 50-50. 90% Yes. his teacher is doing. If 10-20% a student can do, he can qualify. Not a big deal. Not a big deal. next. So next question is, let's circle back to the high school section. This question does not apply to higher secondary block because homework, we don't have much homework in higher secondary. So is homework still relevant high school तक? अभी के ज़माने में. अभी के ज़माने में 2025. 2025. Is homework still relevant? Assignments, winter assignments, summer assignments still relevant? This time we cannot take it homework like that, which was the concept our before years. What is our present concept of homework? That if we will give some concepts to the students, it is type of a advanced study. Are you getting my point? Yes, sir. मतलब, I will ask you to go through this particular points. It should not be like that. It is totally for you. You have to get 100% up. But it should be a type of the advanced study. You have to go for advanced study is important. So Zoeb sir. I think it's not a big deal. It's not a big deal. You can Relevant, do. not relevant. Same Not a thing. big issue. But as per my 3 opinion, months, in 3 months of winter assignment, थोड़ा सा काम तो बनता है. In 10 days of this summer vacation, थोड़ा थोड़ा सा. सा बंद but है. as far as Sir, थोड़ा सा my opinion is concerned, till relevant. fifth, थोड़ा सा. till fifth we shouldn't give this homework and assignments and all that. So Till last class. question. Sir,
So the weirdest excuse a student has ever given you. कोई weirdest excuse किसी भी चीज़ में हो सकता है. तो फारूक सर कल मैंने आपको दिया आईडी कार्ड क्यों नहीं है, बेड पे छूट गया सर, ऐसा ही कुछ. I will quote. I remember one of the. It was not an excuse. It was a funny type that I was teaching very seriously recently in 10th class. One Start. of the what you want to ask this? What is the question? Weirdest excuse. What is the most unusual, weirdest excuse that a student has ever given? Weird. I was teaching in one of my classes, but I was very serious about my topic. I found one of my student was little bit laughing. When I asked him why you are laughing, you know what was his answer? Sir, hasna sunnat hai. I remember him. Hasna I do remember it. sunnat hai. That was a type of. Then I explained that it is not like that. So if I may, that was my batch. That was my batch mate, it was and in it was your- my class. Yes, I remember yes, that. तो क्या what was his answer, sir? हंसना सुन्नत सुन्नत है. है. But we have to understand कि कहाँ पर कैसे. हंसना Behave कहाँ है, करना. कहाँ नहीं हंसना है. Yes, that You was did the- quote an example, Yes, if you remember, sir. yes. I told him that if you go somewhere for ताज़ियत के लिए जाओगे फिर हंसते हंसते जाओगे तो वो आपको वहाँ से मारेंगे, बाहर निकलो, फिर आप यहाँ से कहोगे हंसना सुन्नत है. Sir, last question. आपसे sir. I have a follow-up sir आपके लिए especially. Yes, there are many excuses. बहुत सारे ऐसे excuses हैं. Now I don't remember the particular one, but there are lame excuses. Suppose किसी को बोल रहे हैं sometimes you are teaching in the class. कोई बच्चा disinterested है, बोल रहे हैं क्यों सो रहे हो आप, क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात, सर टॉपिक अच्छा नहीं है. There are various excuses. Sir, last and final question to Zaid sir specifically आपके लिए. Sir, why not maths? देखिए सब आपके अगेंस्ट है यहाँ पे अभी बायो के. Sir, मैं आप ही की टीम में sir. कुछ ना कुछ तो आपको भी बोलना पड़ेगा सर. To be very honest, let me at the end of the day, I would like to share a story. I was in the 10th class in 2006. In 9th class, I was very weak in mathematics. We had this what you call farewell party for the 10th class, and I performed the role of a doctor. Then we used there was a teacher in my school, Wasim sir, legendary teacher. Maybe अगर वो इस podcast को देखे तो उसको पता चले. He used to call me a doctor. और मुझे अपने से थोड़ा अजीब सा लग रहा था, भाई मैं पढ़ने में उतना ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं हूँ, तो why he is calling me doctor. And he was teaching the mathematics. With that teacher I got so much addicted to mathematics. As I said that in 9th class I was not good in mathematics. इतना खतरनाक mathematics मैंने पढ़ा, Hussain, I cannot tell you how many times I have revised the 10th class syllabus, and I have taught my 6 friends. पूरा 10th class का math मैंने अपने 6 दोस्तों को पढ़ाया अपने साथ. And you know what, at the end of the day when I appeared in the examination, I completed my paper in 1.5 hours. Just 1.5 hours I completed. And you know how much marks I got? How much sir? पूरी टेक्स्ट बुक मुझे याद थी. आई श्वेयर आई हैड आप उसको रट्टा बोलो कुछ भी बोलो, बट इतनी बार मैंने प्रैक्टिस किया था, मुझे वो टेक्स्ट बुक ही याद हो गई थी. When I completed my paper, there was a 3 marks question. आप आज भी देख सकते हो 2006 का पेपर. There was a 3 marks question which was out of the textbook, and I was not able to do that. बाकी I got 100, मैं से 97. That single thing, and it was because of that teacher I opted for the medical subject. No doubt, I had a math. Initially, I was a mathematics student also. Then I changed, but the credit goes to Wasim sir. I had great regards for him. He's a But legendary why did you teacher. change sir? I changed because I felt that it is a burden. Maths और biology को एक साथ पढ़ना it was But my difficult. question to you is sir, why choose bio over maths? Sir, यहाँ आपके सारे colleagues sir maths students हैं. In fact sir, मैं खुद bio student हूँ. I'm still confused कि maths क्यों की नहीं sir. हुसैन मैंने कहा 10th क्लास का मैथ मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पूरा याद ही हो गया था. Then in the 11th class I was in the Iqbal Memorial, a very good mathematics teacher, but slightly शायद मुझे difficult लगा हो. I'm not saying that teacher was exceptional, teacher was brilliant, but maybe I could not cope up with that. Then I changed the subject. I opted for the biotechnology instead of the math. I opted for the biotech subject.
Thank you, sir. Thank you so much. So one last question to each and every one of you. सर अगर आप अभी टीचर नहीं बने होते सर क्या दूसरा प्रोफेशन आपने चूज किया इफ नॉट टीचर मैं तो टीचर ही होता. Teacher ही होते. Yes, I am teacher by choice, alhamdulillah. Last sir. I think I would prefer to innovate the things. An innovator. Farooq sir. Same as Akif said that right from the beginning I was interested in this profession. You know that I never appeared even a single time for the competitors, NEET, yeah, that time CT, because my aim was to become a teacher. Jay sir. If not a teacher, a businessman. Businessman. Sir. I do want to conclude right now. We are like a way over time, but I can't conclude without asking this, sir. So, favorite movie or song? Asif sir. Asif sir? Favorite song? Favorite song? I don't exactly remember. I have so many songs. Sir, favorite singer? Favorite singer is Sonu Nigam and Anu Malik. These two singers. Farooq sir, I believe they are real you don't. singers. I think, as if I remember correctly, you don't watch movies or listen to music. It was up to 2004. After that, मैंने close किया. Sir, but you do have a favorite movie. That I know. याद नहीं है. Sir, Now what these about are you? Recently told us 20 years, about. 21 years back. I don't remember so much. Lekin recently my colleagues suggested me to watch that Three Idiots. I think that is one of the best movies where from we can get something. It was because of my colleagues. They told Three me, Idiots. also you should go Your for favorite? it. Many times I told you in the class, नसीहत है उसमें. I like it. Three Idiots. अच्छा हाँ सर. आकिब सर, now you, आपका favorite song क्या है? या singer? सिंगर कुमार सॉन्ग. कुमार सर. हाँ, क्योंकि सर, कोई एक मैं line 90s में हो बड़ा जाए, हुआ हूँ. सर एक line हो जाए सर. दो लाइन मेरी ज़िंदगी की पहली मूवी जो देखी ना, आई थिंक आई वॉज इन मोस्ट प्रॉब्ली इन फर्स्ट और सेकंड क्लास. दैट वाज आमिर खान फिल्म, आमिर खान जूही चावला, क़यामत से क़यामत तक. यस. सर उसमें आपका फेवरेट सॉन्ग है सर कोई, उसकी एक दो लाइन. उसी फिल्म का था वो. सर उसकी एक लाइन हो जाए प्लीज. लेकिन मैं यूजुअली गाता नहीं हूँ. चलिए एक लाइन में आपके लिए. ए मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार, सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की. Thank you sir, thank you so much. So thank you so much sir everyone for gracing us with your presence sir. Sir बहुत टाइम से सोच रहे थे प्लस टू के टीचर से करेंगे पॉडकास्ट. वी हैड टू, हमें ओरिजिनल प्लान ये था कि वी बिगिन विद प्लस टू but he had other plans. Thank you so much for coming today, and it was actually a great discussion, a great time. That is it for today. If you like this video, please consider subscribing and stay tuned for more. Till then, Stay connected, stay tuned, stay curious, keep listening, keep growing. We are your hosts, Sanjib Sheet and Sandeep Koval, signing off. Thank you. Well,